Today we are gathered here for enhanced training on behalf of Sarmanya's Public School, myself Akansha. Today we are discussing about economics. Economics means the study of individual and society in the presence of scarcity. There are two types of branches. First, micro and another is macro. This is going to be a hard decision. I want all three, but I can only afford one. Well, that's economics for you. In a basic sense, economics involves the study of the choices people make to satisfy their wants and needs with a limited supply of resources. People's needs and wants are unlimited. In this case, I want to buy all three products, but I only have enough money to buy one. I have unlimited wants, but a limited quantity of money. The concept of economics also involves the study of the production, distribution, and consumption of goods and services. That means how many goods and services need to be produced, how will they produce them, and who will use them. Let's back up for a minute. A want is something people desire or need to have. They fulfill that want by buying goods or services. For example, if I want something fun to do, I may buy a book, game, or ticket to a theme park. To be clear, a want can be a good or a service. A good is a physical product we can hold and touch. A service is an action provided to us, not something that can be held or touched. For example, I can buy goods like books, movies, and phones. I can also buy services like when the dentist cleans my teeth or I get my hair cut. Whether I'm buying a good or service, I'm fulfilling my wants with my limited resources. In this case, money. In economics, a resource can be anything used to get or create the goods and services that people want. Resources include anything from natural resources from the land, capital, like money and the buildings and machines used to produce the goods and services, and labor, the workers themselves, who produce the goods and services that people want to buy. All of these resources, from the natural resources of the earth, money, building supplies, machinery, workers, and more, are limited. This is the idea of scarcity. Scarcity means having a limited supply of resources to meet the needs and wants of society. Everyone can't have everything they want, after all. Scarcity is what drives economic decisions in society. People, communities, and countries are constantly trying to meet their unlimited wants and needs with a limited number of resources. When society makes economic choices on goods and services, they work to answer three basic economic questions. What should be produced? How will it be produced? Now we have three basic types of what should be produced, how will it be produced, and for whom it will be produced. And who will use it? For example, let's say people have a want for a new video game. A company first needs to decide what game should be created. Next, they'll need to plan what resources will be needed to create it. This includes capital, like money, computers, buildings, and software, labor, the workers needed to produce and distribute the game, and any natural resources needed in the production and distribution of the game, too. Finally, they'll need to discover who will buy their game so they can create and market a product that those people will buy. Countries answer those basic economic questions too. The reason Now we discuss about what is macroeconomics. Macroeconomics focuses on the
happens at the micro level. The economy as a whole is massive. Economic indicators. Statistics that measure one or more aspects of the macroeconomics. First, measure of aggregate production like GDP. What is GDP? GDP is gross domestic product. Measures of employment and unemployment and measures of inflation like the percentage in the consumer price index. Misery index. First is misery index, and the sum of inflation and unemployment rate as a measure of how bad that is miserable the economy is. And what is the goal of economics? Macroeconomics. In thinking about the overall health of the macroeconomy, it is useful to consider three primary goals. First is economic growth and full employment, and other is stable price. Economic growth is ultimately determining the prevailing standard of living in a country. And second one is unemployment, as measured by the unemployment rate is the percentage of people in the labor force who do not have a job. And third one is inflation. Inflation is a sustained increase in overall level of prices. Next, framework. What is the framework of macroeconomics? Economics use theories and models to explain and understand economic principles. In microeconomics, we use the theories of supply and demand in macroeconomics. We use the theories of aggregate demand and aggregate supply. This book presents two perspectives on macroeconomics, the neoclassical perspective and the Keynesian perspective, each of which has its own version of aggregate demand and aggregate supply. Between the two perspectives, you will obtain a good understanding of what derives the macroeconomy. Policy tools. National government have two set of tools for influencing the macroeconomy. First is monetary policy, which involves managing the interest rate and the availability of credit. Second one is fiscal policy, which involves change in government spending, purchase and taxes. And now we discuss about what is gross domestic product. First of all, we discuss what is economy before independence. ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया की इकॉनमी काफ़ी इंडिपेंडेंट थी। जहां अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, वहीं देश की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर थी। साथ ही इंडिया विश्व भर में कॉटन, सिल्क, राइस इत्यादि के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था। बट Now, अब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रोल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का ध्यान इंडिया नहीं बल्कि ब्रिटेन की डेवलपमेंट पे था। उनकी पॉलिसीज के कारण इंडिया की इकोनॉमी चेंज होने लगी। अब इंडिया ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज due to Britain policy, India totally affected. के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर और उनके फिनिश्ड गुड्स का कंज्यूमर बनकर रह गया। India became a consumer. They supply raw materials and they purchases finished goods. एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रुक सी गई।
जिसका मेन कारण था ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए अलग अलग लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स। जैसे उस समय के बंगाल में जमींदारी सिस्टम लगाया गया, जिसमें जमींदार किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, और ऐसा न कर पाने पर उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसीलिए जमींदारों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने और अपनी जमींदारी बचाने में होता था, न कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की कमी के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन करने लगी। कॉलोनियल गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज का बेस नहीं बनने दिया। जैसा हमने देखा, उनकी पॉलिसीज का दो मेन मोटिव था। पहला कि इंडिया को ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना, और दूसरा इंडिया को इंडस्ट्रीज के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मार्केट बनाना, ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके। ब्रिटेन की मॉडर्न इंडस्ट्रीज के मशीन मेड्स और सस्ते प्रोडक्ट्स के सामने इंडिया की वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज सरवाइव नहीं कर सकी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ गया। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कुछ कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स सेटअप किए गए। 1907 में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज भी आए। These companies has been set up in India. In 1907, Tisco, Tata Iron and Steel Company, and another one is Sugar, Cement and Paper Industries. These were set up in India for. लेकिन तब भी शायद ही कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो ऐसे मशीन टूल्स बनाती है जिस मशीन टूल्स की मदद से आगे किसी प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके। कुल मिला के इंडिया की इंडस्ट्रीज का बेस भी हिल चुका था। इंडिया की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल था, जिसकी वजह से इंडिया का आधा फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही रेस्ट्रिक्टेड था। वहीं बाकी ट्रेड कुछ कंट्रीज जैसे चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ अलाउड था। सुएज कनाल के खुल जाने से ब्रिटेन और इंडिया के बीच की दूरी कम हो गई, और इससे उनके लिए इंडिया के साथ ट्रेड करना और भी आसान हो गया। भले ही इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इन एक्सपोर्ट से इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इन पैसों को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वॉर और ऑफिशियल खर्चों में यूज़ करती थी। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी काफ़ी खराब थे, जैसे 16% ओवरऑल लिटरेसी रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सटेंसिव पॉवर्टी एक्सेट्रा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट जरूर हुए, लेकिन ये लोगों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के अपने फ़ायदे के लिए थे। जैसे रेलवेज और पोर्ट्स बनाए गए जिससे रॉ मटेरियल्स को आसानी से ब्रिटेन पहुंचाया जा सके। रोड्स बनाए गए ताकि ब्रिटिश आर्मी को देश के किसी भी कोने में जाने में आसानी हो। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के आने से ऑफिशियल्स को कम्युनिकेशन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आसानी हुई। इन सुविधाओं के कुछ फ़ायदे आम जनता को भी हुए, लेकिन इसका ओवरऑल बेनिफिट ब्रिटिशर्स को ही हुआ। अब जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो हमारे सामने कई चैलेंजेस थे। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में इंडिया को काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी से भी निपटना था। इकॉनमी पे 200 सालों की गुलामी का इम्पैक्ट साफ नजर आ रहा था।